ऑलराइट गाइस, थोड़ा सा डायग्राम फॉलो करते जाओ और मैं क्वेश्चन की वर्किंग एटलीस्ट स्टार्ट करा दूं, फिर नेक्स्ट वाली क्लास में विल कंटिन्यू ऑन विद दीज क्वेश्चंस। ठीक है, जरा रीड प्लीज कर लेना। A small coil is positioned so that its axis lies along the axis of a large magnet as shown. The coil has a cross-sectional area of 0.4 cm square. I'll need these numbers. And the coil comprises of 150 turns. So area is given, number of turns is given. The average magnetic flux density B through the coil varies with the distance x between the face of the magnet and the plane of the coil as shown. So the graph tells you how the strength of the magnetic field varies with the distance. All right. अब values क्या क्या use करनी है ना, उसको discuss कर लेते हैं. I'll need the graph more so than the diagram. थोड़ा सा try करता हूँ कि graph नजर आता रहे. तो first वाले part के अंदर they are simply asking you अच्छा, before I move on to the first part ना, तो जरा calculations में तुम लोग देख लेना. The first part में it says that the coil is positioned 5 centimeters away from the face of the magnet. Initially आपने coil को 5 cm के distance पे रखा है. Use the figure to determine the magnetic flux density. So that's pretty obvious. So at a distance of 5 centimeters, graph से figure out कर लेना. The magnetic flux density works out to be 50 millitesla. Second part में, they are now asking you, show that the magnetic flux linkage amounts to this value. तो पहले formula recap कर लो. So magnetic flux linkage was denoted by the symbol of phi. And if you remember, so formula आपके पास phi का था n for number of turns, b for magnetic field strength, a for the area of the coil. Numbers मैं लगा देता हूँ. मैंने final answer लिखा हुआ है. So number of turns ऊपर से copy कर लेना. Strength of the magnetic field 50 millitesla and area 0.4 cm square. Conversion साथ साथ कर रहा हूँ. Simplify कर लीजिएगा. तो जो green वाला आंसर मैं लिख रहा हूँ ना phi का, that amounts to this value. I'll need this answer for a later stage. So initial वाली position पे when the coil was at a distance of 5 centimeters, mind you, when the coil was at a distance of 5 centimeters, the cutting effect / magnetic flux linkage amounts to this value. Moving on. The question then states, state Faraday's law of electromagnetic induction. वो I think आप बस read कर लो. Next part में it further goes on to say, आगे आप read कर लो. The coil is now moved along the axis of the magnet so that the distance x changes from 5 to 15 in a time of 0.3 seconds. So now we are taking the coil further away from the magnet. From a distance of 5, we are taking it to a new distance of 15. From 5, we are taking it to 15. So the question is asking you to calculate the change in flux linkage. Those steps में कर लेना. You have already calculated the initial value of phi when the distance was 5. So we already have half the answer. I'm copying down this answer from the top. So this was the value of phi at a distance of 5. ठीक है, अब 15 की वर्किंग कर लेते हैं. So at x is equal to 15,
from the graph, the value of B turns out to be, let's see, तो 15 पे चेक करना, the value of B works out to be 8 millitesla. Trust me on the numbers. In case अगर आपको देखना मुश्किल हो रहा हो ना, इसको जूम करने का फायदा नहीं है. मुझे नजर आ रहा है, सो आई गेस काम तो चल ही जाएगा. 8 आ रहा है, रोहिल ने खैर कंफर्म कर लिया है. So the red wali working, which I'm doing right now, is to obtain the final value. Number of turns available थे. I'm hoping आपको याद है. B की value is now coming out to be 8. Area was 0.4. So the answer shown with the red marker, this gives us the final value of magnetic flux linkage. Sorry, final is 4.8 times 10 to the power of minus 5. If you compare the two answers, you can recognize कि change in cutting effect definitely हो रहा है. From an initial value of 3 times 10 to the power of minus 4, the changed value is 4.8 times 10 to the power of minus 5. So change in cutting effect has been established, and that is what they were asking you. So difference निकाल लेना. अच्छा यार, difference निकालते हुए प्लीज ये इंपॉर्टेंट है, ये लिटरली आपकी चॉइस है कि आपको डिफरेंस निकालने के लिए whichever formula suits you. Final minus initial is as good as initial minus final because the change remains the same. So whichever way it suits you. मुझे change का आंसर डायरेक्ट दे देना. 2.5 times 10 to the power of minus 4, I guess. Many a times, a student write down this answer and in brackets, they write a minus sign. ठीक है, माइनस को ब्रैकेट्स में लिख लेना makes more sense because the brackets are implying कि माइनस साइन necessary नहीं है, mandatory नहीं है. तो अगर आपको लिखना हो तो आप माइनस लगा देना. The minus is just implying that the magnetic flux has reduced. ना लगाना हो तो मत लगाइएगा. Next part में they are asking us EMF induced कितना होगा. So based on the formula, induced EMF is rate of change of magnetic flux. Time question में given था. Change आपने previously निकाल लिया. Numbers को जरा check कर लीजिएगा. मैंने फाइनल आंसर इंडिकेट कर दिया. सही. सो साइन की कोई रेलेवेंस नहीं है. ठीक है. इनफैक्ट अगर आपको याद हो ना, तो मैंने आज की क्लास की बिगनिंग में स्टेटमेंट, अगर आपको याद हो, लेट मी जस्ट गो बैक, शायद आपको याद आ भी जाए ना, कि मैं आज वाली क्लास को जब बिगनिंग में क्लास में रीड कर रहा था ना, तो मैंने ये स्टेटमेंट लिखा भी था. फॉर न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस नेगेटिव साइन की कोई रेलेवेंस नहीं है, सो उसको इग्नोर कर सकते हैं. ठीक है. तो कैलकुलेशन करते हुए वेदर यू गो फॉर फाइनल माइनस इनिशियल और इनिशियल माइनस फाइनल, it constitutes the same change. So we can get away with not writing a minus sign. All right. Next question की wording देख लो. फिर as I said, question को आज अपलोड नहीं करूंगा. ये सारे क्वेश्चन जो कल भी करा दूंगा ना, फिर एक साथ अपलोड कर दूंगा. आप रीड पहले कर लो. So the question says that you have a flat coil comprising of n number of turns. The area of the coil is A.
The coil is placed in a manner such that its plane makes an angle of theta with the field lines. Okay, so look carefully. The coil is not perpendicular. Rather, the coil is positioned in a manner such that the plane of the coil makes an angle of theta with the field lines. The question is asking you, using the following symbols, आपको मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज का फॉर्मूला जज करना है. रिमेंबर ओरिजिनल फॉर्मूला ये था, बट ऑफ कोर्स फॉर्मूले को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा. So original formula as we used in the previous example was NBA. But the formula NBA is only valid provided that the field lines are perpendicular to the area, which is not the case over here. तो यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन करनी पड़ेगी. तो मैं फील्ड लाइंस को रिजॉल्व करता हूँ, आप जरा चेक कर लीजिएगा. आई एम कॉलिंग द फील्ड लाइंस एज बी. अब मैं रिजॉल्व करके कंपोनेंट्स बना रहा हूँ. द कंपोनेंट विच आई एम कंस्ट्रक्टिंग विद द ऑरेंज कलर्ड मार्कर, ये बिल्कुल यूजलेस कंपोनेंट है. मैं ये नहीं भी बनाऊंगा तो मेरा काम चल जाएगा. So this is nonetheless b cos theta. But the reason why this component is not of any relevance for me, cross कर देता हूँ. X नहीं है, cross बना दिया है. The reason why this component b cos theta is not of any relevance for me is because this component of the field lines is parallel to the plane of the area. तो ये b cos theta, the orange वाला जो है ना, the orange or the red whatever, इसको आप ignore कर देना, because this component of the field line is parallel to the plane of the coil. ये हटा दीजिएगा. However, the one that is required is the one which I'm constructing with the green marker. Hopefully आपको 90 degrees establish होता हुआ नजर आ जाएगा. मैंने mark भी कर दिया है. So this other component which I've constructed with the green marker, ये मेरे लिए relevant है. This should be B sine of theta. ठीक है, relevant because it is this component which certainly appears to be perpendicular to the area of the coil. ठीक है, so मैंने B को resolve कर दिया into two different components. So the cos theta वाला component which is parallel to the plane of the area has been ignored, and the green wala component, so as to say the one jiske saath maine tick lagaya hai, should be considered. So hence your result should be written as follows. So phi is equal to n times the component b sine theta should be taken into consideration into a. So the final result in this case works out to be nba sine of theta. ठीक है, नेक्स्ट वाला पार्ट अगले क्वेश्चन का देख लो. रीड जरा प्लीज कर लेना. मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूं. This should be fine. तो फर्स्ट पार्ट में तो जस्ट द टर्म फैराडेज लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो तो हो जाएगा. व्हाट आर द टू मार्क्स फॉर? आई थिंक अगर तुम सिर्फ NBA लिखोगे ना, और अगर आप एंगल को इग्नोर कर दोगे तो दिल स्टिल गिव यू 1 mark फॉर करेक्टली एस्टैब्लिशिंग द formula for phi. So I guess 1 mark for just stating NBA, that is interpreting the formula correctly, and the second mark for the resolution, I guess. ठीक है, सॉरी मैं देख नहीं रहा था स्क्रीन पे देखा. ऑलराइट, तो यार पार्ट 1 में तो दे आर जस्ट आस्किंग यू कि फैराडेज लॉ लिखना है, और सेकंड वाले पार्ट के अंदर ये थोड़ा सा हमने अभी डिस्कस भी एक्चुअली किया था, शायद आपको याद भी आ जाए ना. सो मैं ग्राफ तो नहीं मिटा रहा, प्रिज्यूमिंग के वो तो मुझे चाहिए होगा.
अभी मैंने जो ग्राफ बनाया ना ये गलत है, तो उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, do recognize they have given you a graph of B and they are expecting you to construct a graph of induced EMF E. तो प्लीज पहले नोट से ये recognize करना कि the graph of B and the graph of phi are both in phase with each other. So it is perfectly all right for you to literally think along these lines कि आप B को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और आप B की जगह phi भी लिख दोगे ना तो कोई मसला नहीं है, जैसे मैंने किया है. ठीक है, सो ऑल्दो B गिवन था, आप B की जगह phi अज्यूम कर लोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, बिकॉज बोथ ऑफ दीज ग्राफ्स फॉलो ईच अदर. सो इन फेज की वजह से काम चल जाता है. एनीवेज, सो phi का ग्राफ बोलो या B का ग्राफ बोलो, स्लैश करके लिख देता हूँ रादर, दोनों का सेम मतलब बनेगा. ठीक है, अब जो आपके पास फाइनल ग्राफ बनना चाहिए, तो रिमेंबर 2 स्टेप्स में आपको करना था. सो EMF वाज d phi अपॉन dt. अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस भी किया था. तो पहले ग्रेडियंट्स कैलकुलेट कर लेना. सो फर्स्ट वाले पोर्शन का 0 ग्रेडियंट है, सेकंड वाले पोर्शन का कांस्टेंट पॉजिटिव ग्रेडियंट है, और लास्ट वाले का स्टीपर कांस्टेंट नेगेटिव ग्रेडियंट है. ये मैंने बना दिए है ना. तो जो पोर्शन मैंने शो किया है ना, दैट इज जस्ट इनकॉर्पोरेटिंग d phi अपॉन dt. फिर जब आप इसमें माइनस साइन को भी इनकॉर्पोरेट कर दोगे ना, तो आपका पूरा का पूरा ग्राफ फ्लिप हो जाएगा बिकॉज ऑफ द माइनस साइन. तो जो पहले मैंने बनाया है, इफ इट सूट्स यू तो आप भी पहले ये बना लीजिएगा और माइनस साइन को बाद में अकाउंटेबल कर देना. सो ऑल यू नीड टू डू फॉर द नेगेटिव साइन इज जस्ट फ्लिप द एंटायर ग्राफ. तो अगर आपको सूट करे तो स्टेप वाइज कर लेना. तो जस्ट फाइंड आउट द इवैल्यूएशन ऑफ द ग्रेडियंट फर्स्ट. सो टेक d phi upon dt सेपरेटली. ग्रेडियंट की इवैल्यूएशन हो जाए, देन द नेगेटिव साइन कैन बी टेकन केयर ऑफ लेटर ऑन. तो मैंने अभी माइनस साइन को इनकॉर्पोरेट नहीं किया, अब इरेज करके प्रॉपर ग्राफ बना देता हूँ. तो फ्लिप कर दीजिएगा. सो दिस इज हाउ द ग्राफ वुड अपेरेंटली लुक लाइक. एक सेकेंड ना. सही है. Have they continued the graph a little after 3t? No, they haven't. वो 3t का vertical line बनी हुई है just as a mark. So the graph extends only up till 3t. So the area of the coil is given as 28. Read आप लोग कर लो. Number of turns आपको given है 160. The magnetic flux density is given by the formula mu naught n multiplied by I. The value of n is given as 1.5 times. Current is 3.5 amperes. पार्ट में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकालनी है. सो बेसिकली बी की वैल्यू. सो फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर लेते हैं. Remember mu naught was 4 pi times 10 to the power of minus 7. N is given in the question as 1.5 times 10 to the power of 3. Current is also provided, which is 3.5 amperes. जी जनाब, जरा quickly. Thank you, Ali. 6.6 times 10 to electrostatic constant. So mu naught is a constant. So that value is given in data booklet. All right, now with the value of B known, next part where they are asking us to calculate the magnetic flux linkage, which means phi निकालना है. नंबर जरा टॉप से देख लेना.
6 times 10 to the power of minus 3. Area is in centimeter square, 28. So that needs to be converted. So 28 times 10 to the power of minus 4. ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर. सो ये 5 का रिजल्ट आ जाएगा. थैंक यू. 3 times 10 to the power of minus 3 Weber. I'll need this answer. जरा थोड़ी देर के लिए इस रिजल्ट को याद रख लेना. 3 times okay, रेहान ने लिखा, how do we know that we didn't have to use sin theta? Angle given नहीं था ना. So usually अगर वो sin theta वाला component चाहिए होगा ना, they'll specify something regarding the angle. So since there was no information regarding the angle, so we can presume that the field lines are acting perpendicularly with the area. Okay, so as I said, I'll need this answer ना. So इसको जरा याद रख लेना. Next part में ये काम notes में से कर लेना. So basically this idea. तो जो standard definitions है ना, I guess वो मैं skip करता जा रहा हूँ. अब next part में लिखा है, ये carefully देखना. The current in the solenoid in the previous part is reversed in direction in a time of so and so. Calculate the e.m.f induced. So current जब reverse होगा ना, particularly if the current gets reversed, the field will also get reversed, which means if the initial flux was coming out to be 3 times 10 to the power of minus 3, this is the answer from above. So when the current gets reversed, so the magnetic flux linkage will also get reversed. So देखो मैं final answer कैसे लिख रहा हूँ. I'm writing the same number but with a negative sign. ठीक है, minus because of the fact that the current has been reversed as the question implied. तो अब change निकाल लेते हैं. अच्छा, whether you go for initial minus final, I don't care, or you go for final minus initial, the change will remain the same. अब जरा working जाएगा. It works both ways, हाँ. Final minus initial और initial minus final, जो भी आपको सूट करे. और फिर आपको induced EMF निकालना है, which is delta phi upon t. Time is 0.8. जी अली, जब तक अली आंसर मुझे ठीक है. थर्ड वाला देखिएगा. चारों मैक्सिमम हो जाएं तो यार प्लीज मुझे स्टॉप करते जाइएगा जहां पर भी कोई पार्ट अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो ना. और इफ यू फील आई एम गोइंग अहेड, मुझे प्लीज जरा पॉज करवा कर पूछ लीजिएगा, तो आई जस्ट रिवर्ट बैक. वर्डिंग तुम लोग देख लो क्वेश्चन की. जो रेलेवेंट टर्म्स है ना, मैं उनको हाईलाइट कर रहा हूँ. मैं पहले करंट का डायरेक्शन मार्क कर रहा हूँ. सो हैव अ लुक. The red arrows are indicating the direction of the current. ठीक है. Now with this direction of current, if you apply the right hand grip rule, तो अप्लाई करके देख लो. So your fingers should point in the direction of the current, and in the right hand grip rule, your thumb should point towards the north pole. So north आपके left पर आ जाएगा, south on the right. The question is asking us to construct the field lines now. So the field lines will come out of north and they'll go towards the south. Arrows बना देता हूँ, वो आप देख लेना. So the arrows marked with the purple colored marker are the ones that were asked. ठीक है, so field originating from the north
and it's destined to go towards the south. So from north to south, I've done that working. Second part में wording read कर लो. State the feature that indicates that the magnetic field strength at each end is less than at the center. So have a look at the diagram. How do we know that the field is lesser in strength at the poles as compared to at the center? Field lines further apart. Slash less concentrated. Sorry guys. Next वाले part में a Hall probe is positioned close to the solenoid as shown. Then the Hall probe is rotated about its axis XY. State and explain why the magnitude of the Hall voltage varies. The Hall voltage depends on the angle between the face of the Hall probe and the field lines. ये first statement हो गया. Then the second statement. When rotated, comma, the angle changes. Hence, Hall voltage also varies. Okay, so first point, um, the Hall voltage depends on the angle between the face of the Hall probe and the field lines. When rotated, the angle changes. Hence, Hall voltage also changes. अच्छा रोहिल ने आंसर में लिखा था चेंज इन कटिंग इफेक्ट. मैंने ये टर्म मेंशन नहीं किया. एंड लुक केयरफुली क्यों नहीं किया? बिकॉज फैराडेज लॉ की तो बात उसने पार्ट सी में करना शुरू करी है ना. तो चेंज इन कटिंग इफेक्ट का तो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में अब जाकर आएगा फ्रॉम पार्ट सी ऑनवर्ड्स. तो मैं सी वाले पार्ट के बाद वाले पार्ट्स के अंदर इफ आई नीड आई कैन मेक यूज ऑफ द टर्म change in magnetic flux or something along those lines. See? So since they are specifying the term Faraday's law in the next part, the change in cutting effect can be used from C part onwards. So you know the way the question is kind of set ना, थोड़ा सा उसकी judgment आप लोग read करके थोड़ा सा एक habit develop कर लें कि कहाँ पर कितनी detailing की requirement है. अब the question is saying that the Hall probe in the previous part is now replaced by a small coil of wire connected to a sensitive voltmeter. And now this is just another way the examiner is trying to highlight the term जो हमने कल किया था, सर्ज कॉइल. ठीक है, रिमेंबर हमने कल डिस्कस किया था कि सर्ज कॉइल इज इससे पहले भी किया था इनफैक्ट. A surge coil is a coil containing a large number of turns where the ends of the coil are connected to a sensitive voltmeter in this case. The question is saying state 3 different ways in which an EMF may मैं थोड़ा सा scroll up कर रहा हूँ. So if a surge coil is positioned close to the solenoid, and let me just draw that for you. So the question is asking you, what changes can we do to the surge coil in order to ensure
कि हमारे पास वोल्ट मीटर पे रीडिंग आएगी. So I've just drawn that surge coil for your understanding. Now from yesterday's class, अगर आपको याद हो, तो हमने changes ये suggest किए थे. पहला change था कि the direct current, if you remember from yesterday's class, must be replaced with an AC current. Second change, if you recall, जी रोहिल ने पहला वाला सही लिखा है, हुसैन ने भी सही लिखा है. रोहिल ने रोटेशन का भी लिखा है. So rotate the coil about its axis. एक और भी हमने डिस्कस किया था. तीसरा वाला, move the coil closer / away from the solenoid. ठीक है, so move the coil back and forth. Sorry guys, excuse me. So move the coil back and forth, closer and away from the solenoid, and change the DC into AC, and rotate the coil about its own axis. Ali ने भी सही option दिया है. We can also replace it with an iron core. ये भी सही है. Next वाले question में, Reha, iron gets magnetized. So if you replace it with an iron core, if iron gets magnetized, it will create its own field lines. And the creation of field lines around iron is going to increase the cutting effect. All right. Question 4 में, Reha, the part that you were asking previously, why did I not include the so-called term sin theta? So fourth वाले में देखो sin theta include हो जाएगा. ठीक है, because the diagram kind of mentions the idea of theta. First part में, what is meant by magnetic field? Region in which a moving charge experiences a force. Second part के अंदर, क्या अब आपको थीटा की टर्म्स के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स का रिजल्ट लिखना है. So again, from yesterday's class, you'd remember the component which I'm constructing right now, ये फजूल है. So this component, the so-called b cos theta, इसकी relevance नहीं है. The other component which I'm constructing with the green marker, ये मेरे काम का है. Because the green colored component, as you can clearly see, is going to establish an angle of 90 degrees with the area of the coil. So this component will be b sine theta, and consequently, the result for magnetic flux phi is n times b sine theta into a. अच्छा नोट करो, मैंने n लिखा है, बट मैं अब n को रिमूव कर रहा हूँ, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स की कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है. सही. सो n की रेलेवेंस नहीं है. रोयल का स्टेटमेंट सही है. सो n मुझे रिमूव करना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स की कोई इम्प्लीकेशन नहीं है. सो जस्ट द टर्म b sin theta multiplied by a. Next part. Since I'll have to use this formula for the next part ना, जरा याद रख लेना. रीड कर लो. I'll just draw the horizontal component of the Earth's magnetic field. Although they haven't asked, but nonetheless draw कर रहा हूँ. तब तक आप पूरा रीड कर लो. Just a diagrammatic representation for your understanding.
to the horizontal component BH. तो मैंने इस तरह से ड्रॉ किया है कि apparently आपको नजर आ रहा है कि the window is opened. The window is opened so that the plane of the window is now rotated through an angle of 90 degrees. 90 जरा याद रखना. First part में explain why when the window is opened, the change in magnetic flux linkage to the plane of the window is zero. So मैं vertical component पहले draw कर दूं. अभी आंसर मत दो, पहले vertical component draw तो कर ले, अभी तो draw भी नहीं किया है. So vertical component अगर आपको construct करना हो, so I'm doing that with the green colored marker. So vertical component, if constructed, this is probably how it would look like. ठीक है, और अब I think आपका statement makes more sense. तो जिन लोगों ने wording में लिखा था ना, something regarding parallel. So I think the answer should be along these lines. मैंने vertical draw कर दिया है, just in case, ताकि आप जरा appropriately देख लो. So the answer should be the vertical component is parallel to the plane of the window. Hence, no cutting effect. The second part में अब calculation करनी है. Calculate for the window opening through an angle of 90 the change in the magnetic flux linkage. Those steps. Let's start with the initial flux. First of all, number of turns given नहीं है, तो मैंने NBA नहीं लिखा. I've just written as BA. Yes, Rohil. So सबसे पहले I'm trying to calculate my initial flux B times A. So B की value is given. Top पे check कर लेना 1.8 times 10 to the power of -5. अच्छा एरिया को डायग्राम से देख लो. मैं सर्कल कर रहा हूँ वैल्यूज को. It is 95 centimeters by 52 centimeters. So the area will be 0.95 times 0.52. ये मेरा आधा आंसर आ रहा है. This is the initial value of phi. पहले मैं ये लिख लूँगा 8.9 times 10 to the power of -6 Weber. अब बाकी की वर्किंग इसी की साइड पे कर रहा हूँ. स्टेटमेंट देख लीजिएगा. When rotated through 90 degrees, no need to do any calculation. Just the fact that when it is rotated through 90 degrees, the final value should become 0. And in case if you're wondering why 0, the simple reason, if initially the field lines were perpendicular to the frame of the window, then after a rotation of 90 degrees, the same field lines will now become parallel to the frame of the window. Hence, the final value will be 0. And since you are expected to calculate the change, so again, it doesn't really matter whether you go for final minus initial or you go for initial minus final. It's your choice, जो आपको suit करे. Hence, this becomes the result.
लास्ट पार्ट के अंदर इसका स्टेटमेंट नोट्स में से कर लेना और फर्दर आगे in part 2 it says that the window is opened in a time of 0.3 seconds. So you are supposed to calculate the value of the average EMF induced. So change in flux upon time. Change in flux was the answer of the previous part. Time is 0.3. G Ali. 3 times 10 to the power of minus 5. Thank you, yaar. Next question. मैं किसी एक जगह पर अगर क्वेश्चन का सीक्वेंस भूल जाऊं ना तो प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिएगा. अभी तो मैं अपने अंदाजे से चल रहा हूं. क्वेश्चन की वर्डिंग्स देख लो. There is a current carrying wire. It carries a current of 4 amperes. We have positioned a Hall probe at a distance d away from the wire. And if you read the question, so the question is saying, wordings read kar lo. The Hall probe is now moved away from the wire along the line XY. मैंने पिंक से highlight कर दिया. It's moved away from the wire. So keep in mind, when you start taking the Hall probe further and further away from the wire, let's see what will happen. You would agree. लिखता जा रहा हूँ स्टेटमेंट की फॉर्म में और फिर आगे रीड करता हूँ. You would agree that as distance increases, the magnetic flux density will decrease. So as I keep moving further away from the wire, surely the strength of the field will start to reduce because inverse proportion है ना. And based on the formula of Hall voltage, ये हमने previous topic में किया था. तो जिन टर्म्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना वो आप देख लो. I think you would appreciate as B will start to decrease, you should expect the value of Hall voltage to also start reducing. अब मैं आगे question read करता हूँ. So what I've explained you so far is that as you keep moving the Hall probe further away from the wire, surely the strength of the magnetic field because of the wire will decrease. And then based on the formula of the Hall probe, which we did in magnetism, as B decreases, the corresponding value of Hall voltage must also decrease. So on the basis of this, read आप करो. And the question is asking you कि आपको ग्राफ बनाना है for how the Hall voltage varies with the distance. So statements आप पढ़ लीजिएगा. जो मेरा conclusion है मैं उसकी बेसिस पे ग्राफ की कंपाइलेशन कर रहा हूँ. चेक कर लीजिएगा. एक्सिस को टच मत करना. इनवर्स प्रोपोर्शन का स्टैंडर्डाइज्ड शेप बना देना. ठीक है. तो मैंने स्टेटमेंट्स ऊपर लिखे हुए हैं, उसकी बेसिस पर अप्रोप्रिएट ग्राफ की कंस्ट्रक्शन देख लो. ठीक है. सो आई हैव ब्रोकन डाउन माय आंसर इनटू 2 stages. The first stage was as the distance begins to increase, the strength of the magnetic field will start to decrease. And then based on the formula, as B, magnetic flux density reduces, the corresponding Hall voltage
must also reduce. So inverse proportionality की वजह से I've constructed a standard shape of graph. वो आप देख लेना. आगे proceed कर रहा हूँ. जी रेहा बोलो. Sure, can I proceed? All right. So in the question it says, a solenoid is connected in series with a resistor as shown. ठीक है, so solenoid connected to a resistor. As the magnet is being moved into the solenoid, heat energy is transferred in the resistor. Use laws of electromagnetic induction to explain the origin of this thermal energy. So आपको Faraday's law और Lenz's law को use करके बताना है what constitutes the presence of this thermal energy. Start with the basic idea. A magnet will surely have its field lines. For your understanding, I'm just constructing a few field lines to begin with. So you can clearly see that as I start moving the magnet, these field lines will surely start cutting with the coils of the solenoid. है ना, तो flux linkage तो होगा. So start your answer along these lines. As the magnet moves, a change in magnetic flux is generated based on Faraday's law. ये first statement है. Second point, this induces e.m.f in the solenoid circuit. Third statement, induced e.m.f gives rise to the flow of induced current. Before I proceed, remember in case of solenoid, we prefer to use the term induced current. But if the shape was changed into something like a metal plate or a metal block, something along those lines, then the term eddy currents. So induced e.m.f gives rise to the flow of induced current. The fourth point, according to Lenz's law, this induced current opposes the motion of the magnet. Energy is dissipated as heat to overcome this opposition. The wordings doesn't have to be precisely this, but the idea needs to be within the framework of this. So 4 marks के लिए it's the red, the green, the purple and the black. ठीक है, मैंने eddy currents का term use इस वक्त नहीं किया because मेरे लिए जरूरी नहीं था. Why? Because the structure showed a solenoid. However, solenoid के बजाय if it was a conductor, if it was a metal plate and so on and so forth, तो फिर I would have replaced my term induced current with the term eddy currents or eddies. See? Um, Ryan की wording भी सही है. If anybody just wants to read that quickly.
जो राया ने सजेस्ट किया है ना, उसी चीज को बेसिकली आपने थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लोर करना है। ठीक है, सो द आइडिया ऑफ cutting effect, induced EMF, induced current, and finally electrical energy wasted or dissipated in the form of heat energy, hence thermal losses. नेक्स्ट वाला देख लो। क्वेश्चन की नंबरिंग का ट्रैक गलत हो तो खैर है, या बता दीजिएगा। वर्डिंग्स देख लेना। योर कॉइल कंप्राइजेस ऑफ 40 टर्न्स। The coil is moving at a constant speed. The displacement of the coil is shown as x from a fixed point P. Okay, the graph tells you how phi changes with the distance. The first part, it says the coil is moved at a constant speed between point P and the point where x is equal to 3 centimeters. So आपने 3 का distance cover कर लिया है, starting from the point P, x is equal to 3. First part में calculate the change in magnetic flux. Graph से देख लो. Your initial magnetic flux is 5 times 10 to the power of minus 6. Final is 3 पे चेक कर लेना. So change आ जाएगा. माइनस करके लिखना है तो आपकी चॉइस है. I'll probably need these answers. नेक्स्ट पार्ट में इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको गिवन है. एंड दे वांट यू टू कैलकुलेट. इसमें कैलकुलेशंस कहाँ थी? इट वाज मोर लाइक डिटरमिन. अभी तक तो कैलकुलेशंस नहीं थी अनलेस के अभी फिलहाल तो जरूरत नहीं थी, आगे चल के शायद आ जाएगी. नेक्स्ट पार्ट में इंड्यूस्ड ईएमएफ गिवन है. अच्छा, मैं एक चीज और भी देख लूं. नंबर ऑफ टर्न्स को याद रखना, और 40 टर्न्स शायद आगे किसी जगह पर चाहिए होगा. एक्चुअली 40 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, जो मैंने मिस किया है, विच इज वाई दे सेड कैलकुलेट करना है. तो 40 टर्न्स ऊपर दिए हुए थे. सो आपको कैलकुलेट द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज पूछा हुआ है. अभी हमने ये कैलकुलेट किया है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यहां तक अभी हमने कैलकुलेट किया है. लिंकेज के लिए रिमेंबर टू मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ टर्न्स, तो इसीलिए कैलकुलेट लिखा था. तो लिंकेज, यार ये रेड नहीं, पर्पल नहीं यूज कर रहा, कुछ ग्रीन या कुछ कर देता हूँ. सो द टर्म लिंकेज, रिमेंबर, नंबर ऑफ टर्न्स को एसोसिएट करता था, सो इसीलिए शायद कैलकुलेट लिखा हुआ था. सो लिंकेज के लिए फाइनल आंसर निकाल लीजिएगा. कितना बनेगा यार? टर्न्स कितने हैं? 40. जी, कुछ बता दीजिएगा यार, कितना रिजल्ट है? 80 आ जाएगा. सो 8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 5. अभी चेक कर ले. ओके, सही है. नेक्स्ट पार्ट के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ गिवन है, स्पीड कैलकुलेट करनी है. अली भाई शुरू हो जा. पहले टाइम निकाल लेते हैं. टाइम इज 0.16. स्पीड निकालनी है.
डिस्टेंस याद रखिएगा, आई थिंक 3 सेंटीमीटर्स कवर हुआ है, डायग्राम पे नजर आ रहा होगा। मैंने सर्कल भी कर दिया। डिस्टेंस आई गेस 3 सेंटीमीटर्स का है, सो 0.03। कितना लिखूं? 0.19 कर देता हूँ। नेक्स्ट पार्ट के लिए आई हैव टू स्क्रॉल बैक अप। सो आप पहले ये पार्ट पढ़ लो ताकि फिर मैं इसको स्क्रॉल अप कर दूं। स्केच द वेरिएशन विथ एक्स, और ग्राफ बनाना है इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर अ डिस्टेंस 0 थ्रू 6। तो अब मैं दोबारा स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, रादर इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। सो लुक केयरफुली, they have already given you the value of the induced EMF, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ। For the first 3 seconds, the induced EMF is already given as 5 into 10 to the power of minus 4. So for the first section, they have already given you the value of induced EMF as 5 times 10 to the power of minus 4. थोड़ी देर के लिए मुझे इसको छोटे स्केल पे लाना पड़ा है ताकि टॉप का ग्राफ आपको नजर आता रहे। तो पहला ग्राफ जो आप बना दोगे, रेड से बना रहा हूं, 5 times 10 to the power of minus 4. This value was already given to us. Now carefully, for the second section, which I'm highlighting with the green colored marker, notice करो double change हुआ है. Notice करो the change is double. Because for the same distance of 3, look carefully, the change has been doubled. So अगर आप okay हैं with my statement that the change has been doubled, तो I think फिर मेरे लिए ये कहना ज्यादा sensible होगा कि मैंने जो first वाला section red से show किया था, उसका induced EMF was given as 5 into 10 to the power of minus 4. तो जो green वाला section है, उसके अंदर आपके पास double the change आ रहा है। तो double the change का मतलब है कि जब आप ग्राफ प्लॉट करो, सजेशन देंगे डबल चेंज की वजह से ग्राफ मुझे कैसे बनाना चाहिए, मैं ग्रीन से बना रहा हूँ। दो चीजों का ख्याल रखिएगा, न्यूमेरिकल टर्म्स में वैल्यू को डबल करना है और ग्राफिकल टर्म्स में एक्सेस को फ्लिप करना है। थोड़ा केयरफुली देख लो। ठीक है, सिर्फ लार्जर वैल्यू नहीं है, ट्वाइस द प्रीवियस वैल्यू रादर देन लार्जर वैल्यू। सो रिहा एक सेकेंड ना, पहले मैं रोहेल के स्टेटमेंट को वो कर लूं। सो नॉट जस्ट अ लार्जर वैल्यू but literally twice the previous value, because if you compare the red portion with the black portion, not the black, sorry, if you compare the red portion rather with the green portion, not only green is steeper, but look carefully, the change occurring in green is exactly twice that of red. So the green portion of the graph must be 2 times in terms of magnitude. So not just larger, but rather twice as large, so as to say. Acha, Reha is saying, where am I getting these values from? Okay, which value are you referring to? If you are referring to this value, so ये question में given है.
I'll just circle this for you. ये given है. Okay, so the value was given to me for the first section, which was 5 times 10 to the power of minus 4. So that is from where I used this value. The 10 to the power of 4 wali. Where have I written 10 to the power of 4? Let me see. Have I? 10 to the power. Okay, the 10 wali ना सही है. हाँ अभी बता रहा हूँ. So the second value which I got was purely from observation. So since when I compared the red portion with the green one, I recognized कि green के अंदर the change in delta phi is twice as compared to the change for the red portion. So if you are okay with the fact कि green वाले portion के अंदर the change is double as compared to red, so hence on the basis of that, I established that the value for the green portion must also be exactly double as compared to the value for the red portion. ठीक है, so मैंने नंबर को कैलकुलेट करके नहीं ऑब्टेन किया था, रादर वो जो मैंने जूम आउट करके ग्राफ दिखाया था ना, उसके ग्रेडियंट की इवैल्यूएशन मैंने करी थी. एंड वंस आई रियलाइज्ड that the green portion was not just steeper, rather the green portion was twice as steep. Hence I established that the induced EMF in this portion must also be of twice the magnitude. So from there, I got this value of 10 times 10 to the power of minus 4. Kind of मैंने डबल कर दिया था वैल्यू को. सही. ये सारे एरोज वैरोज सब मिटा रहा हूँ. I don't think you need this. I leave the working of the mainframe with you. बाकी सब कुछ मिटा रहा हूँ. नेक्स्ट वाले पेज पे शिफ्ट कर रहा हूँ. नो इश्यूज रिया. स्टेटमेंट देख लेना. एक क्वेश्चन करा के रखता हूँ अली. अभी जरा वो टेम्पो चल रहा है ना, तो एक आध और अभी करा के फिर 5 मिनट ब्रेक बेटा दे देता हूँ. So two coils P and Q are placed. एक्चुअली सबसे ज्यादा मेहनत मैं कर रहा हूँ, फिर अली कर रहा है, फिर रोहिल कर रहा है, क्योंकि रोहिल थ्योरी वाले आंसर्स दे रहा है और अली बेचारे की शामत आई हुई है. Two coils P and Q are placed close to one another as shown. The current in coil P is constant. So यार P के अंदर there is a constant current flowing. I'll just mark the current for reference purposes. अब कोई भी direction mark कर दो, doesn't really matter. The question says an iron rod is inserted into P. So, अब इसके अंदर एक iron का rod आ जाएगा. It then goes on to say, explain why during the time that the rod is moving, there is going to be a reading on the voltmeter. Okay, so think of an iron rod which is inserted inside the coil P. This is your iron rod, so as to say. And think along the lines that so long as the iron rod is moving, we should expect a reading on the voltmeter. Answer को approach कैसे करेंगे? Remember, there was a current in the coil P. Your statement should be along these lines.
as current flows in coil P, it magnetizes the iron rod. ये पहला statement हो गया. So the current in coil P magnetizes the iron rod, thereby creating field lines around the iron rod. Up second statement. As the rod moves, its field lines cut with coil Q. This change in cutting effect induces voltage. Reha, start with the basic idea. When current will flow through coil P, this will definitely magnetize the iron rod, which I've shown you with the pink colored highlighter. तो iron rod तो magnetize हो जाएगा. अब मैं इसकी magnetic field lines बनाता हूँ. So the magnetic field lines for the iron rod, once it gets magnetized, वो मैंने draw कर ली है. अब you should be able to clearly see that these field lines are cutting with the coil Q. So as the rod moves, there is going to be a change in cutting effect between the field lines and the coil Q. And this change in cutting effect will induce a reading on the voltmeter. ठीक है ना? So when current flows through coil P, that current magnetizes the iron rod. फिर मैंने further लिखा, hence creating field lines around the iron rod. इसके बाद, as the rod moves, these field lines will get an opportunity to cut with coil Q. And it is this change in cutting effect which is eventually going to be responsible for inducing voltage. Second part भी देख लेना. Current का ग्राफ दिया हुआ है and they are asking you to predict how would the graph of voltmeter reading look like. So again recognize, इसके लिए वो काम करना है जो हमने कल डिस्कस किया था. पहले d phi upon dt मैं सेपरेटली कर रहा हूं माइंड यू. सो d phi upon dt का मतलब है पहले ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लेते हैं. दैट इज 1/2 ऑफ द वर्किंग. फिर इसके बाद आई विल टेक द नेगेटिव साइन सेपरेटली इनटू अकाउंट और मैं उसको उल्टा कर दूंगा, फ्लिप कर दूंगा, इन्वर्ट कर दूंगा, एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कर दूंगा. सो मैं दोनों स्टेप्स एक साथ नहीं कर रहा. रादर पहले मैं ग्रेडियंट की इवैल्यूएशन अलग से करके उसका ग्राफ बना देता हूं. वंस मेरा ग्रेडियंट वाला ग्राफ बन जाएगा ना, तो माइनस की वजह से मैं ग्राफ को फ्लिप कर दूंगा. लेट्स सी मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन है. द पोर्शन व्हिच आई एम हाइलाइटिंग विद द रेड कलर, it's a straight line, so the gradient is constant and the gradient is positive. अभी मैंने माइनस साइन को कंसिडर नहीं किया. आई टेक केयर ऑफ द नेगेटिव साइन लेटर ऑन बिकॉज ऑल आई हैव टू डू विद द नेगेटिव साइन इज कि मुझे बस फ्लिप करना है. सो दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ लेटर. सो कांस्टेंट पॉजिटिव वैल्यू, think of this to be the first section. The red goes with the red. अब मैं जिसको ग्रीन कलर से शो कर रहा हूं, हाँ ग्रीन ही सही है यार.
तो ये ग्रीन वाला पोर्शन जरा देख लेना। सो ग्रीन वाले पोर्शन के लिए again the gradient is constant, but this time it is negative and it is much more steeper. So negative constant but a much larger value, so much more steeper. Join बाद में कर दूंगा. So the red goes with red, the green kind of goes with green. डॉटेड लाइंस आपकी कन्वीनियंस के लिए बना रहा हूं, उसकी कोई रेलेवेंस एज सच मेरे लिए नहीं है. सॉरी यार, एक सेकेंड ना, जरा प्रॉपरली बना दूं. अब जो थर्ड वाला सेक्शन है ना, जिसको मैं ब्लैक से हाईलाइट कर रहा हूं, इसके अंदर द ग्रेडियंट इज 0. तो पहले तीनों ग्राफ के सेक्शंस को देख लो. The what is the gradient in the current time graph denoting the rate at which the current varies, na? And that rate of change of current is responsible for inducing EMF. So you can say that the gradient of the graph of current against time is telling us the rate at which current varies, and that change in current brings about a change in magnetic field, which eventually causes EMF to be induced. अच्छा, अब ये ग्राफ आधा बना है. The reason I'm saying कि ये ग्राफ आधा बना है is because अभी I've only taken d phi upon dt into consideration. है ना, अभी the negative sign is still left to be worked out. So once you take the minus sign also into due consideration, अब मैं माइनस लगा रहा हूँ, तो माइनस की वजह से ये पूरा ग्राफ आपका फ्लिप हो जाएगा. ठीक है, दैट इज पूरा ग्राफ आपका एक्सिस के ऊपर इन्वर्ट हो जाएगा. ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा. तो बिफोर आई फ्लिप, यहां तक अगर ओके होना तो फिर मैं फ्लिप कर दूं, क्योंकि अगर मिटा दूंगा और फिर कुछ पूछोगे तो फिर बनाना पड़ेगा. सो मैं मिटा भी नहीं रहा हूं. I'm just holding if I can see any wordings, anything along those lines which needs any explanation, so I'll go ahead and do that first. If not, तो फिर मैं flip करके उल्टा करके बना दूंगा. ठीक है, so अब मैं flip कर रहा हूं. So the flip is because of the minus sign in the formula. So a horizontal line below the x-axis, followed by a horizontal line above the x-axis of a larger magnitude, and then another horizontal line on the x-axis. अच्छा, अब जो ओरिजिनल ग्राफ था ना, मैं उसको इरेज कर दूं. मैंने जो अलग अलग कलर कोड्स यूज किए थे ना, आई डोंट थिंक यू नीड दैट. आई लीव द वर्डिंग्स, बट आई एम जस्ट रिमूविंग द एक्स्ट्रा पोर्शन. और मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूं अगर आपको रीजनेबल. ठीक है, तो जरा चेक कर लीजिएगा. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स: a horizontal line below the x-axis, the red one, there a similar horizontal line above the x-axis but of a larger magnitude because the second portion's graph was more steeper, and then a third horizontal line right on top of the x-axis, ठीक है, which was the black colored line. ठीक है guys, 5 minute रुकता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ.
तो यार 5 मिनट्स में मैं खुद भी आ रहा हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ. ऑलराइट यार, लेट्स कंटिन्यू. यार आज मैच चल रहा था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का. आई गेस इंडिया लॉस्ट, नहीं? डज एनीवन नो हाउ मच डिड विराट कोहली स्कोर? 85. He got out, Rohil, or he was there till the end? आउट हुआ फिर हार गए. ओके. ऑलराइट यार, थोड़ा केयरफुली. um, a coil of insulated wire is wound onto one end of an iron core and connected to a battery as shown. So zara carefully dekhna. You have a power supply and you have a coil. उसको आपने आयरन के ऊपर वाइंड अप किया हुआ है.
It further says an aluminum ring is placed on the core. So the aluminum ring is positioned. The ring can move freely along the length of the core. So we can expect the ring to move up and down freely. Initially, the switch is open. Use Faraday's law and use Lenz's law. ये वर्डिंग्स वाले क्वेश्चन जो है ना यार, ये तुम लोगों को के गले पड़ जाते हैं, बिकॉज आप लोग जब आंसर देना शुरू करते हो ना, तो इवन दो यू नो व्हाट यू आर राइटिंग एंड स्टिल यू डोंट नो व्हाट यू आर राइटिंग, बिकॉज आप लोग टर्म्स के अंदर आगे पीछे करके कॉन्ट्रडिक्शंस काफी कर रहे होते हो. तो हैव अ लुक कि इसकी वर्डिंग्स कैसे लिखनी है. तो यूज Faraday's law and use Lenz's law to explain why you would expect the aluminum ring to jump up when the switch is closed. Okay, so basically the question is asking you what causes the ring to jump up. ठीक है, ring आपकी ऊपर क्यों जाएगी as soon as the switch is closed. Now, before I start with the reasoning now, or rather before I start writing down the reasoning, इस बात को recognize करो कि step wise क्या होगा. So when you close the switch, you would expect current to flow. मैं लिखता भी जा रहा हूँ in fact. When switch is closed, थोड़ा carefully देखना statements को. Current flows through the solenoid. This current magnetizes the ferrous core. Hence creating field lines around the core. These field lines cut with the solenoid, inducing e.m.f. So अभी तक मैंने सिर्फ Faraday's law की wordings लिखी हुई है. Further on, induced e.m.f. gives rise अब I can use the term eddy currents if you like. थोड़ा सा मुझे और भी स्टेटमेंट अभी आगे लिखना है ना, so I'll need some space at the down below. पहले जितना लिखा है ना वहां तक की wordings देख लो. So when the switch is closed, current begins to flow through the solenoid. This current magnetizes the ferrous core, hence creating field lines around the core. These field lines cut with the solenoid, inducing e.m.f. based on Faraday's law. The induced e.m.f. gives rise to the flow of eddy currents / induced currents, which
Guys, is the screen getting shared? Sorry, मेरे पास आपके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, मे बी बाय मिस्टेक. Okay, so are we back on track? All right. Screen share हो रही है ना अली? ठीक है. Sorry यार, I guess by mistake I just pressed onto something तो वो disconnection हो गया था मेरे end पर. Anyway, so मैं wording conclude कर लूँगा. So this opposite. Just give me a second ना, ये glitch कर रहा है. All right. ठीक है. Last few lines read कर लूँगा. So induced EMF gives rise to the flow of eddy currents slash induced currents, which create an opposition. This opposition applies an upward force on the ring, and if the magnitude of the force exceeds the weight of the ring, then the ring jumps upwards. Let the other me enter, please. Hold on, a guy. Yeah, एक second. All right. Sorry. हाँ जी. So coming back to the working. थोड़ा सा zoom out कर रहा हूँ ताकि diagram भी आपको नजर आ जाए. ठीक है. So when the switch is closed, current flows through the solenoid. This current magnetizes the iron core, hence creating field lines around the core. These field lines cut with the solenoid, thereby inducing EMF. So that was Faraday's law. Induced EMF will give rise to the flow of eddy currents or induced currents, which create an opposition. This opposition applies an upward force on the ring, and if the magnitude of the force exceeds the weight of the ring, then the ring jumps upwards. Hussein, sir, let the other one me and could you please explain this again? हाँ मैं वापस read कर देता हूँ. So Ali, सबसे पहले Hussein, sorry, when you close the switch, current begins to flow through the solenoid. So I'm not marking any direction of the current, but nonetheless, there will be current in the solenoid. Now, as current begins to flow in the solenoid, this current is going to magnetize the iron core. Now, as soon as the iron core gets magnetized, field lines are going to be established around the iron core. थोड़ा untidy हो जाएगा, लेकिन nonetheless. Now, these field lines will get a chance to cut with the solenoid. तो कटिंग इफेक्ट होगा. तो मैंने फर्स्ट वाली लाइंस के अंदर यहाँ तक जो रेड से लिखा है ना, बेसिकली वो ये एक्सप्लेनेशन दी है उसने. यहाँ तक ओके है ना, तो फिर मैं ब्लैक वाली लाइंस को आगे रीड कर दूं. ठीक है, राया ने सही लिखा है, एडी करंट्स विल अपोज द वेट ऑफ द एल्यूमिनियम रिंग. यस, ठीक है. एक्चुअली एडी करंट्स के बजाय the wording should rather be the eddy currents will flow in a manner so as to apply an opposing force, and that force will be opposite to the weight of the aluminum ring, Ryan. ठीक है ना? Let me repeat myself, that eddy currents will flow in a manner so as to oppose the weight of the aluminum ring. ठीक है. उसके बाद the induced EMF gives rise to the flow of induced current.
that is eddy currents. Based on Lenz's law, eddy currents will flow in a manner so as to create an opposition. This opposition will apply an upward force on the ring, and if the magnitude of this opposing force exceeds the weight of the ring, then we can expect the ring to be lifted up from its initial position. So Black Valley wording was the continuation of the Red Valley statements. Red Valley statements essentially leading to the idea of Faraday's law, or Black Valley statements extending that idea leading to the opposition as per Lenz's law. डायग्राम को if you're okay तो मैं erase कर दूंगा. ठीक है. नेक्स्ट वाला देख लो. थोड़ा सा वर्डिंग्स के मामले में एहतियात कर लीजिएगा. लास्ट क्लास में हमने ये वाला ग्राफ बनाया था. तो कल हमने ये वाला ग्राफ बनाया था. आई होप आपको याद होगा. इसके जो बाद के क्वेश्चन की वर्डिंग्स है ना, मैं चाह रहा हूँ उसको डिस्कस कर लूँ. ठीक है. सो दिस वर्किंग दैट यू आर सीइंग राइट नाउ, I've actually completely lost the clue of the questions के numbers क्या थे. So अब मैं आगे सिर्फ Q लिख दूंगा for the questions. बाद में इनको सेट करके भेज दूंगा. So 3 अलग-अलग slides पर है working. So this was the question that we did in the last class. In yesterday afternoon वाली क्लास में ये किया था. So इसके बाद जो आगे के questions रह गए थे ना, on that slide. So this is the slide from yesterday's class. इसकी wordings भी देख लो. Wordings आप लोग read कर लो. Statement पढ़ लीजिएगा. जो relevant terms है ना, मैं उनको highlight कर देता हूँ. फर्स्ट पार्ट नहीं करा रहा. ये आप खुद कर सकते हो, बिकॉज दिस इज विथ रिगार्ड्स टू स्टेट फैराडेज लॉ. तो मैं सेकंड वाले पार्ट से मूव कर रहा हूँ. As the disk oscillates, change in magnetic flux induces EMF, which gives rise again. अब मैं एडी करंट्स का टर्म यूज कर रहा हूँ, which gives rise to the flow of eddy currents. ठीक है. वो रोहिल ने सही स्टेटमेंट लिखा है. सुलेमान ने लिखा सर आपकी वॉइस क्या हो गया मेरी वॉइस को यार, मुझे लग रहा है सही है. अनलेस के ब्रेक आ रहा हो तो दैट्स समथिंग व्हिच आई डोंट नो. मेरे एंड पे तो वैसे आवाज बिल्कुल सही है. ओके. इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में इट सेज use energy principles to explain why the disk will come to rest. ना, तो इसके अंदर वो एनर्जी की डिसिपेशन का जो अली असगर ने लिखा है, पहले ये लिखना एडी करंट्स flow in a direction so as to oppose the motion of the disk. Energy is therefore dissipated as heat.
less energy is left for oscillations. Therefore, disk comes to rest. ठीक है गाइस, मेरा ख्याल है अब मैं यहाँ पर कंक्लूड कर रहा हूँ. सो टेक केयर एंड खुदा हाफिज.